Assalamualaikum guys, this is our 14th podcast and this is our part 2 of Existence of God. And as usual, it's me and Abdullah Ali Khan with me. Abdullah Ali Khan, how are you? फिटफाट यार हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेस्टर्न फिलोसफर्स के आइडियाज़ अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और ये दूसरा पार्ट है इन दिस सीरीज इस Yes, सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे बट आई थिंक सो कि हमने ना इस सीरीज़ में जो मेजॉरिटी ऑफ द फिलोसफर्स है ना हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल वो कवर हम कर लेंगे इस एपिसोड में तो नेक्स्ट वन में वील मूव ऑन टू ईस्टर्न फिलोसफर्स सूफिज्म हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट रूमी वगैरह hopefully. So in this podcast, I'm going to discuss Leibniz and Spinoza, and Abdullah will discuss Descartes और सेंट ऑगस्टीन Descartes and St Augustine. Yeah. So if you want, you can start with Descartes. What do you think? या Acha, I was going to discuss Descartes in the last podcast, but we were short in time, so we did not have enough time to discuss Descartes. So Descartes एक फ्रेंच फिलोसोफर था, मैथमेटिशियन था और एक साइंटिस्ट था. He's if you've obviously read that geometrical कार्टेशियन प्लेन आप जो पढ़ते हो मैथ्स में राइट द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस Yes. पे आप ग्राफ्स वगैरह चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करते हो तो दैट कार्टेशियन प्लेन वाज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय Descartes. Oh, He's very famous for inventing analytic geometry, very famous for proposing or rather developing theory of Innatism and defending Cartesian dualism. Or if you watched the last episode, we discussed Thomas Aquinas's five ways, जिसमें काफी ontological arguments भी थे. I guess the third was the ontological argument. So after Aquinas, over 500 years, वो ontological arguments वगैरह जो हैं, they died away. People did not give much credit to those arguments anymore, but Descartes, of 500 years after Aquinas, revived ontological arguments. Descartes के ज़माने में there was emphasis on Aristotelian demonstrative methods, like everything had to be demonstrated in order to be believed. That is one reason why the authorities उसका गलत फायदा उठाया to inculcate wrong ideas in the minds of the masses. जिस तरह authorities कहती थी कि the earth is the center of the universe, right? तो गैलीलियो आया, उसने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड से हट के हाइपोथेटिकल मेथड यूज किया कि द अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. तो जब उसको कंडेम किया तो डिकार्ट का यही इंटायर पॉइंट था कि मूव अवे फ्रॉम द एम्फोसिस फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड्स एंड इंडिविजुअलिज्म को आप प्रमोट करो, थिंक फॉर योरसेल्फ. डिकार्ट्स मेथड इसलिए मशहूर है क्योंकि डिकार्ट एम्प्लॉयड दैट मेथड वेयर ही basically killed himself, not literally but killed his old beliefs, all his priori knowledge and everything that was inculcated and indoctrinated in him. उसके जो beliefs उसने inherit किया, all of that. So like जिस तरह बुल्ले शाह कहता है कि पढ़ पढ़ इल्म जार किताबां कदी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਜਾ ਵੜਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਕਦੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ. Just like that, Descartes says कि why would you want to understand God or understand someone else when you don't even understand yourself, right? So he emphasizes on trying to find out the foundations of your beliefs, whatever you believe in, anything that you believe in, human rights, feminism, anything, any kind of theory, ideology that you associate with, think about that belief and question its authenticity and its foundation. और दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई डेकार्ट ने कहा कि सोसाइटी में जो भी आपका डोमिनेटिंग आइडिया या थियरी या रिलीजन है ना, यू शुड क्वेश्चन इट फर्स्ट ऑफ ऑल. You should question it, but you should act like you belong to that group. Descartes, that is why he proposed the ontological arguments for the existence of God, which kind of are demonstrated in his book, Discourse and Method, और दूसरा इसका पार्ट है इसी कंपाइलेशन में, द मेडिटेशंस ऑन द फर्स्ट फिलोसफी. इसके पेज 144 पे Descartes starts off proving the existence of God, which goes something like this. If from the fact alone that I can draw from my thought the idea of a thing, it follows that all I can recognize clearly and distinctly as belonging to that thing does indeed belong to it. Cannot I derive from this an argument and a proof demonstrating the existence of God? It is certain that I no less find the idea of God in me, that is to say, the idea of a supremely perfect being, than that of any figure or number whatsoever. And I know
no less clearly and distinctly that an actual and eternal existence belongs to his nature than that all I can demonstrate of any figure or number truly belongs to the nature of that figure or number. यहाँ पे डिकार्ड कह रहा है कि कोई भी चीज़ है, आप उसकी एक प्रॉपर्टी डिस्टिंक्टली और क्लियरली अगर परसीव करते हो, तो दैट प्रॉपर्टी विच यू क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली परसीव इज हैज नेसेसरली to be a part of that thing. If you like have an idea of a tree in your head, right, and you see कि अच्छा ये ट्री इसकी क्वालिटी है mortality, right, it has to perish, it has a specific lifetime. You have that idea of its mortality, you perceive that very clearly and distinctly, which kind of proves the fact that it indeed is a quality of that thing. अगर आप इसको formulate करो तो it goes something like this: whatever I clearly and distinctly perceive to be true or to be contained in the idea of something is true of that thing. Second, I clearly and distinctly perceive that its necessary existence is contained in the idea of God. Therefore, God exists. अब यहाँ पे necessary existence की का एक बड़ा important role है, जिस तरह we talked about in the philosophy and the metaphysics of Aristotle के necessary beings और contingent beings की वहाँ पे बात की गई थी. यहाँ पे डेकार्ड कह रहे हैं कि necessary existence is a perfection in and of itself. क्योंकि अगर आप सोचो तो contingent existence which is subject to chance, like हमारी existence is subject to chance, क्योंकि we are dependent beings, we are dependent on the existence of our parents, because to be born we need our parents, and they to be born need their parents. So all our existences of mortal beings are contingent existences. But necessary existence, which is independent, which does not need a cause to exist, it can only be one. And because it is independent, it does not need any cause to exist. It has to be a perfection in and of itself. इसको डेकार्ड इस तरह एक्सप्लेन करता है. He says, when we attend to immense power of this being, we shall be unable to think of its existence as possible without also recognizing that it can exist by its own power. And we shall infer from this that this being does really exist and has existed from eternity, since it is quite evident by the natural light that what can exist by its own power always exists. So we shall come to understand the necessary existence is contained in the idea of a supremely perfect being. यहाँ पे डेकार्ड कह रहा है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है ऑफ अ सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग, दैट इज अ बीइंग हैविंग ऑल परफेक्शंस, एंड नेसेसरी एग्जिस्टेंस एज इट डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी अ परफेक्शन itself is a perfection, and therefore a supremely perfect being exists. ये essentially था डेकार्ड का पहला आर्ग्यूमेंट. अच्छा, अब ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है डिकार्ड का, दिस इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे कुछ टर्म्स वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड बिफोर वी गेट इनटू दिस आर्ग्यूमेंट. डिकार्ड बात करते हैं रियलिटी की. रियलिटी एज इन हाउ परफेक्ट समथिंग इज. अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है ऑफ समथिंग, फॉर एग्जांपल पेपरोनी पैशन पिज्जा, राइट, so again I'm giving the same example, but that idea is not more real than the pizza itself. If that pizza exists in front of your eyes in reality, it has more reality than the idea of that pizza, right? So that is जिस सेंस में डिकार्ड रियलिटी की बात करता है. अब डिकार्ड कहता है कि दो टाइप्स ऑफ रियलिटी होती हैं, फॉर्मल रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी. हमारे जो कंसेप्शन है ना फॉर्मल वर्ड और ये वर्ड ऑब्जेक्टिव जो है, ये काफ़ी डिफरेंट है जिस सेंस में डिकार्ड ने यूज़ किए हैं ये वर्ड्स उससे. फॉर्मल रियलिटी की डिकार्ड जहाँ तक बात करता है, इट इज़ द काइंड ऑफ रियलिटी दैट थिंग्स हैव इन दिस वर्ल्ड, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज़ द रियलिटी ऑफ द थिंग्स दीज थिंग्स रिप्रेजेंट. अब डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिटी होती है. डिकार्ड एक हायरार्की बयान करता है चीज़ों की. उसमें आती है इन्फिनिट सब्सटेंसेस, फाइनाइट सब्सटेंसेस और मोड्स, विच आर मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, जस्ट एज कलर, शेप, साइज, आइडियाज वगैरह वगैरह. तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना, इनकी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रियलिटी. इन्फिनिट सब्सटेंसेस सच एज गॉड हैव द मोस्ट रियलिटी. फाइनाइट सब्सटेंसेस सच एज अस ह्यूमन बीइंग्स हैव लेसर रियलिटी देन इन्फिनिट सब्सटेंसेस. फिर आती हैं मोड्स लाइक कलर, साइज, शेप एक्सेट्रा, दे हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रियलिटी. एक आइडिया जो है ना, इट कैन हैव फॉर्मल रियलिटी क्योंकि एन आइडिया इज अ मोड and it is a mode of thought itself, and it can also have objective reality because it represents something outside of itself. जैसे कि an idea of a tree represents a tree, an idea of a car represents a car. तो क्योंकि these two ideas represent different things, one a car, the second a tree, so they have different objective realities. But because both of them are ideas, which is the thing they have in common, they have equal intensities or amounts of formal reality. हमने तक ये बात की है हमने कि आइडियाज में होती हैं सेम फॉर्मल रियलिटी और डिफरिंग अमाउंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. अब डिकार्ड यहाँ पे कहता है कि नो
effect can have a greater amount of reality than its cause. एक स्टोन है ना, आप उसको बना सकते हो. स्टोन कैन बी मेड बाय चिपिंग ऑफ a larger piece of rock, but a stone not be made color, for example. A stone can be made off by chipping off a larger piece of rock, क्योंकि जो larger piece of rock है उसमें ज़्यादा reality है. लेकिन जो color है, it cannot be made out of a color because a color is a mode and it has lesser reality, like we discussed. Infinite substance is most, finite lesser, and modes least reality. अब डिकार्ट कहता है कि समथिंग विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी मस्ट अल्टीमेटली बी कॉज्ड बाय समथिंग विद दैट डिग्री ऑफ फॉर्मल रियलिटी. जिस तरह एक आप मिसाल ले लो ट्री की. एक ट्री है ना, इट हैज एटलीस्ट द सेम डिग्री ऑफ फॉर्मल रियलिटी एज द आइडिया ऑफ अ ट्री हैज ऑब्जेक्टिव रियलिटी. और अगर हम इस कॉजल चेन को लेते जाएं पीछे, इफ वी ट्रेस इट फार बैक इनफ, we will find a cause with as much formal reality as the idea has objective reality. And if Descartes can locate an idea that has more objective reality than he has formal reality, then उसको समझ आएगी अच्छा कि देयर मस्ट एग्जिस्ट समथिंग आउटसाइड ऑफ हिमसेल्फ जिसने वो आइडिया उसके दिमाग में डाला है. ऐसा कोई आइडिया नहीं है जो वो लोकेट कर पाता है एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ गॉड. और क्योंकि डिकार्ड हैज द रियलिटी, द फॉर्मल रियलिटी ऑफ अ फाइनाइट सब्सटेंस, क्योंकि वो खुद एक फाइनाइट बीइंग है, तो द ओनली थिंग which could have inculcated that idea of an infinite substance has to have infinite formal reality, which is God. अब डिकार्ट कहता है कि since the idea of God cannot have originated him in himself, वो कहता है कि the idea of God must be the cause of this idea and must therefore necessarily exist. अब ये जो डिकार्ट की थियरी आप कह लो, ये इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू एरिस्टोटल्स cosmological argument, क्योंकि Aristotle talks about material beings की causal chain, right? Four kinds of causation, the cosmological argument, nothing comes from nothing, all of that. लेकिन Descartes on the other hand talks about ideas की causal chain, के what was the first cause of ideas, right? We discussed in Aristotle की last वाला episode कि what was the first efficient cause of the first material being. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Descartes की कि what was the cause of the first idea of God in Descartes, right? Of what was that? What was the cause of that? अब डेकार्ट ने जब अपना ये प्रूफ ऑफ गॉड दे दिया है, तो वो बात करता है कि ये आइडिया आया कैसे उसके अंदर. डेकार्ट कहता है कि तीन टाइप्स ऑफ आइडियाज होते हैं. इनेट आइडियाज होते हैं दैट यू बॉर्न विद, एडवेंटिशियस आइडियाज होते हैं कमिंग फ्रॉम विदाउट, आउटसाइड, और फिक्शनल आइडियाज होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली. वो कहता है कि हाउ डिड आई रिसीव दिस आइडिया ऑफ गॉड. ये आइडिया एडवेंटिशियस नहीं हो सकता कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ हिमसेल्फ, नॉर कैन इट बी इन्वेंटेड बाय हिम. Thus, he concludes that this idea must be innate. खुदा ने उसको पैदा किया with him having that idea of God in his mind at Sorry. birth. This is the same thing that I was talking about in the last podcast as well when we were discussing Saint Thomas Aquinas. तो ये भी वही बात हुई जिस तरह वो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हर इंसान जो है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है. That he has some idea of God when he is born. फिर जो उसके माँ बाप हैं उसको यहूदी बना देते हैं या हिंदू बना देते हैं या कुछ कुछ भी बना देते हैं. So what do you think? It aligns over here or no? Yeah, I यार ये जो आइडिया है ना theory of innatism का, it is a very interesting topic. Like मैंने इसकी against भी काफ़ी theories पढ़ी हैं. I used to believe इन द theory of innatism पहले, लेकिन अब मैं जॉन लॉक के theory of tabula rasa को की तरफ ज़्यादा inclined हूँ. Even though I'm not, मैंने एक अपना साइड नहीं चूज कर ली. आई एम काइंड ऑफ शिफ्टिंग बिटवीन द टू. एक थियरी है नेटिज्म की जो पहले प्लेटो ने प्रपोज की थी सबसे पहले, आई बिलीव 2400 साल पहले. प्लेटो वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द थियरी ऑफ नेटिज्म. उसने थियरी ऑफ एनामनेसिस अपनी प्रपोज की थी. थियरी ऑफ रिकलेक्शन कहते हैं लोग उसको. उसका आइडिया ये था कि आपकी जो रीइंकारनेशन होती है, और विद एवरी टाइम यू रीइंकारनेट, योर सोल loses all knowledge that it had of its previous life due to the trauma of birth, and उसकी न्यू लाइफ में उसका नॉलेज जो वो गेन करता है, इट इज सिंपली एक्ट ऑफ रिकोलेक्टिंग, राइट. तो ये थियरी ऑफ इनेटिज्म थी जो प्लेटो ने प्रपोज की. फिर डिकार्ट ने उसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया. फिर लॉक आया, जॉन लॉक. उसने अपनी किताब एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में, ज़बरदस्त किताब, उसमें अपनी वो 3 एसेज के अंदर वो पेश करता है थियरी ऑफ द बुला रासा. वो थियरी वेरी शॉर्ट वर्ड्स में है कि वी आर बॉर्न विद आवर माइंड्स बीइंग ब्लैंक स्लेट्स, कि हम जब पैदा होते हैं हमारे माइंड में कोई नॉलेज नहीं होता, एंड जो भी हम नॉलेज लेते हैं ना ज़िंदगी में अटेन करते हैं, इट इज़ सिंपली इट कम्स टू अस थ्रू आवर ओन एक्सपीरियंसेस. इसलिए कॉजल डिटर्मिनिज्म का जो आइडिया है कि वट एवर हैपन्स टू यू बिकम्स यू, ट्रेजेडी हैपन्स टू यू बिकम द ट्रेजेडी.
तो उसके साथ ये आइडिया जो है बड़ा, ये इट गोज हैंड इन हैंड विद दैट। बट आई बिलीव हमें इस और पॉडकास्ट एक करनी चाहिए थ्योरी ऑफ इनेटिज्म के ऊपर। मगर एक बात तो डन है, अगर चाहे तूने फिलोसफी ना पढ़ी हो, अगर तू कोई भी, अगर तू चाहे 8 या 9 साल का बच्चा हो और तू जाता है पहाड़ों के बीच में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तू कहीं भी जाता है और तू देखता है एक ब्यूटीफुल सनसेट को, यू वुड थिंक लाइक ये किसने बनाया है, देयर इज समवन हु मेड दिस, या आपके अंदर एक आइडिया आता है कि नहीं आता। तो यहाँ तो तू डिकार्ड की जो थ्योरी पेश कर रहा है कि यस देयर इज एन आइडिया ऑफ गॉड इन एवरीवन, चाहे वो रिलीजियस हो या ना रिलीजियस, में कोई रिलीजन पढ़ा हो या ना फॉलो करता हूँ, बट ह्यूमंस स्टिल हैव an idea of God since birth. That's why humans have been searching for God since the dawn of human race. What do you think? Yeah, I believe it is kind of, yeah, इसमें you can approach this debate using several approaches, like आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि because we need something to endure our suffering, we find meaning in finding God, right? It gives us meaning। लेकिन आप अगर उस एंगल से अप्रोच नहीं भी करते हो, तो you see कि some people कम टू द कंक्लूजन के गॉड एग्जिस्ट अगर वो पेगन कल्चर्स में भी पैदा होते हैं, राइट? उनके दिमाग में एक आइडिया होता है ऑफ अ सुप्रीम बीइंग हु इज ऑल पावरफुल, हु इज ओमनीपोटेंट, हु इज ओमनीशिएंट। सो यू कुड क्वेश्चन कि अच्छा हाउ डिड दैट आइडिया अराइज इन देम। जैसे अभी मैं जिस तरह भी मैं अगले इसके बाद बात करूंगा सेंट ऑगस्टीन की, ही हिज फादर वाज अ पेगन, ही लिव्ड इन अल्जीरिया, जो जहाँ पे मैकेनिज्म चल रहा था, इट वाजंट एक्चुअली काइंड ऑफ मोनोथिस्टिक सोसाइटी। तो हाउ कुड ही फाइंड दैट अनलेस ही हैड दैट आइडिया ऑफ गॉड विद इन हिम, जिसको उसने थ्रू रीजन उसको परसीव किया, तो ही फाउंड गॉड। अब यहाँ पे दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो हर इंसान को जिंदगी में उसके पास इन्नेट आइडिया होता है गॉड का, या फिर ये हो सकता है कि एट अ पॉइंट इन अ पर्सनस लाइफ जहाँ पे ही कैन प्रैक्टिस रीजन, ही कैन प्रैक्टिस रैशनैलिटी, उसके साथ कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट वाला वाकया हो, जिसकी वजह से he submits to the existence of a being which is much greater than himself, that he cannot understand but he cannot deny as well। ये हो सकता है। तो या इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। I'm I kind of believe, yeah, we do have some kind of innate ideas, at least about the existence of God। Like you said कि इंसान जो है वो अपनी सफरिंग के पीछे एक रीज़न ढूंढना चाहता है, so that why humans they find reasons to prove the existence of God, यही था ना। तो मगर ये भी तो हो सकता है कि इंसान अपनी सफरिंग की वजह किसी और चीज़ को भी तो दे सकता है, ठीक है। वाई गॉड, वाई ह्यूमंस आर यार, स्टिल क्योंकि इन इट परस्यूट इट गिव्स ऑफ गॉड। पर्पस टू आवर एग्जिस्टेंस, राइट? इफ यू बिलीव कि इफ ऑल ऑफ दिस इज अ कोइंसिडेंस, कि सारा एवोल्यूशन ने किया है, देयर इज नो सुप्रीम ओवरसियर और सुपरवाइजर और अ बीइंग दैट क्रिएटेड अस, हमारा क्रिएटर ही कोई नहीं है, हम हमारी फिर एग्जिस्टेंस मीनिंगलेस रेंडर हो जाएगी ना, हमारी 60 साल 70 साल की जिंदगी। क्योंकि जो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी, और गॉड का कॉन्सेप्ट भी है, इट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। के अच्छा सफरिंग होती है, एंड्योर इट, बिकॉज you can be rewarded for it in the afterlife। But if you do not have an idea of God and consequently no ideas of the afterlife, तो you're like अच्छा ये 60 70 साल की जिंदगी है, हम इसमें क्या ही उखाड़ लेंगे। नॉलेज अगर आप चाहते हो, यूर ए रिसर्चर, कितना कुछ आप हासिल कर लोगे। अगर आप प्लेजर ढूंढते हो, कितना प्लेजर ढूंढ लोगे, एट द एंड यूल डाई, राइट? सो इफ यू डू नॉट हैव एन आइडिया ऑफ गॉड, यू डू नॉट हैव आइडिया ऑफ द आफ्टर लाइफ, देन so your life is meaningless। काफी philosophers, existential philosophers, they their life was meaningless, right? Because they were atheists as well, they were very empirical about things, they wanted to find a rationality behind everything। So yeah, I believe कि ये जो meaning वाला, it it is not only done for that purpose। You should not believe in God because belief in God gives your life meaning, not only for that purpose, but because of the bigger picture, because you should believe in God, whether or not that idea is innate, or it's found through your reason only। You there, bro? Yes, I am. So do you want to continue? Yeah, yeah, that was Descartes' argument essentially। Yeah, अच्छा, there No was a worries. comment though कि you guys should suggest books जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, तो this is the book I suggest। ये है compilation, जिसमें ये दो किताबों की compilation है। एक है इसमें Discourse on Method by Descartes, दूसरी है Meditations on First Philosophy by Descartes। These are two books that you should read।
Yes, maybe we can write their names in the description of our video. Yep, hopefully. Yeah, so over here, I would like to discuss about लेबनीज या लेबनीज was a जर्मन फिलोसोफर, एक मैथमेटिशियन था, थियोलॉजियन था और एक साइंटिस्ट था। इसकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मैथमेटिक्स में वो है द इन्वेंशन ऑफ कैलकुलस। और ही वाज अ ह्यूमन बीइंग ऑफ हाई इंटेलेक्ट एंड इसकी अचीवमेंट्स के बारे में फ्रेंच फिलोसोफर जो था वो ये कहता है कि व्हेन वन कंपेयर्स हिज टैलेंट्स टू द टैलेंट्स ऑफ लेबनीज, he thinks he's tempted to throw away all his life work and just sit in a dark corner and just forget about everything. That's how he compared his intellectual level to that of Leibniz. So Leibniz ने वही जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था सेंट थॉमस एक्विनास का जो फाइव प्रूफ्स, फाइव ways to prove the existence of God, इसने उनको elaborate किया. He elaborated the uh, third proof, which is the possibility and necessity proof. Yeah, uh, which had an idea about contingent beings and necessary beings. Contingent beings वही है, like we discussed, like these things can or cannot exist. There is a possibility and actuality to their existence. But necessary beings, they are the ones who create contingent beings, and they are they have to exist, you know, in order for contingent beings to exist. तो ये आइडिया था सेंट थॉमस एक्विनास को, इसने आगे जाके ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया और ज़्यादा एलेबोरेट किया। सो यहाँ लेबनीज वो इस बात को ज़्यादा आर्ग्यू करता है कि वाई इज़ देयर एनी वर्ल्ड एट ऑल एंड वाई इज़ दैट the way it is, you know। वो कह रहा है अगर why is there something other than nothing? That's what is the argument that Leibniz tries to elaborate in his discussion of Saint Thomas Aquinas ways to prove the God. तो लेबनिज ये सोचता है यहाँ कि देयर मस्ट बी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई देयर इज समथिंग और व्हाई देयर इज अ वर्ल्ड एट ऑल। ठीक है, ही इंडोर्सेस हिज प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट reason for this. So what is the principle of sufficient reason? So the principle of sufficient reason goes like this: like if you take any feature of the world, and if world could have failed without to any way without that reason, then there must be an explanation why the world is that way. Okay, so this the principle of sufficient cause goes like this: कि any contingent fact about the world must have an explanation। ठीक है, अब उसमें ये एक्सप्लेन करता है कि अगर एक हम दुनिया का कोई भी एक फीचर लें, यू नो, एंड अगर अगर दुनिया उस फीचर के बगैर फेल हो जाती, ठीक है, सो देयर मस्ट बी। ठीक है, तो मैं किस जगह पे था, आई वाज एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन ये हाँ था कि वही कर रहा था। एनी contingent fact about the world must have an explanation। ठीक है, वो इसी आर्ग्यूमेंट को यूज़ करके ही ट्राइज टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, उसका जो प्री प्रेमिस ये है कि इफ़ नथिंग existed beside things that are on this world, then there would be an explanation of why these things exist। ठीक है, for this he uses the example of a book of geometry। ठीक है, वो कहता है अगर हम एक बुक लेते हैं ज्योमेट्री की, हम अ, उसकी कॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक दिस कॉपी ऑफ ज्योमेट्री बुक केम फ्रॉम अनदर कॉपी। ठीक है, एंड दैट कॉपी केम फ्रॉम अनदर। ठीक है, बट वी कैन नॉट एक्सप्लेन why is this book of geometry written in a specific way। ठीक है, why this book of geometry was written, what was the purpose of writing this book of geometry। ठीक है, he uses this argument to explain the problem with our world। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम दुनिया में किसी भी चीज़ को ले लें, फॉर एग्जांपल आई टेक अ बिग माउंटेन। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से माउंटेन्स बन गई, but this doesn't mean I can explain the reason why the mountains were in the first place। ठीक है, what was the reason that caused those tectonic plates to collide and make the mountain? Then he goes to continues to place the same argument on the world। ठीक है, हम कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट थिंग्स हम उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइक विच हाउ द थिंग्स ऑन अर्थ came from their previous previous you can say previous form, but we cannot as a whole
the things on earth can explain the reason why the earth is in existence. ठीक है, so this is a really you will have to literally read this in detail in order for this to understand. ठीक है, उसके बाद के लेबनीज कंट्रास्ट करता है बिटवीन टू काइंड ऑफ नेसेसिटीज. ठीक है, first of all he tells us about physical necessity, and then he tries to explain about metaphysical necessary things. The physical necessary things are in the world because of the laws of nature, and they are existing because of the laws of nature. ठीक है, for example, everything around us, the world, आसमान, ठीक है, पहाड़, ज़मीन, सब कुछ जो है, these are existing because of the laws of nature. And if the laws of nature were different, these things would be existing or won't be existing or would be different. And on the other hand, if we want to discuss the metaphysical necessary things, these things are existing without any kind of qualification or any kind of existence or any kind of condition. So the metaphysical things include is God, and the physical necessary thing is everything around us, from our world to the universe. So he says that since the laws of nature could be different, some things could be different, something can be physically necessary but not metaphysically necessary. उसके बाद वो अपने जो law of sufficient reasoning उसको और explain करता है, that I'll just discuss over here. It goes like this: any contingent fact about the world must have an explanation. And now it is a contingent fact that there are contingent things. The fact that there are contingent things must have an explanation. The fact that there are contingent things can be explained by any contingent things. Like I told you, कि सारे जो contingent things हैं on earth, they cannot explain the existence of earth itself. Earth जो है वो खुद भी एक contingent thing है. The fact that there are contingent things must be explained by something existence is not contingent. अब वो कह रहे हैं कि दी सारी contingent बीच की जो existence है, it would be only explained by something which is not contingent, or which is not dependent upon another thing for its existence. So therefore that contingent that being which answers the which answers the existence of contingent things is a necessary being, and that necessary being is only one God. अब आखिर में लेबनिज अपने cosmological argument को इस तरह in 5 points he tries to summarize all of his points. So first point goes like this: any contingent fact about the world must have an explanation. ठीक है, any contingent fact about the world must have an explanation. कोई भी contingent fact, he refers to any contingent fact about the world. It is a contingent fact that there are contingent things. Yep, the fact that there are contingent things must have an explanation. Okay, right? किसी भी contingent thing के exist करने की explanation होनी चाहिए. The fact that there are contingent things can be explained by any contingent thing. ठीक है, अब कह रहे अभी कोई भी किसी भी contingent thing की existence कोई और किसी और contingent being किसी और contingent thing की existence से हम उसको explain नहीं कर सकते. The fact that there are contingent things must be explained by something whose existence is not contingent, i.e. उसकी जो existence है वो necessary होगी. So the necessary being, so there is a necessary being, or वो necessary being is God. What do you have to say about this? It's like he's just explaining the Saint ideas, Saint Thomas Aquinas ideas. उसने उसी को ज़्यादा explain किया था in his cosmological argument. Yeah, I was talking to you about this before we started the podcast. This tragedy of originality. कि कोई भी, there are very few original thinkers, right? बाकी जो philosophers हैं, most philosophers के कामों में आपको नजर आता है evolution और adoption, या फिर फर्दर आर्गूमेंट्स, किसी एक फिलोसोफर का काम उठा लिया और उसको आपने या तो क्रिटिक कर दी. जैसे कांट की फिलोसफी में आपको इतना उसके ओरिजिनल प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नहीं मिलते, बट रादर क्रिटिक्स ऑन द आर्गूमेंट्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑफ अदर फिलोसफर्स. उसी तरह लिबनिस की जहाँ तक बात है, लिबनिस का आइडियाज़ जो है, इट इज़ सिमिलर टू एरिस्टोटल्स आइडियाज़, cosmological arguments, contingent necessary beings, and also a lot similar to Thomas Aquinas' ideas, ontological arguments.
यस, अब द प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन सब चीज़ों को समझा रहे होते हैं, दीज थिंग्स आर रियली अ बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यू नो। इट इज़ मच ईज़ियर इफ यू रीड these things on paper. Do you Like agree or you not? you you understand it, you have understood it yourself, लेकिन आप किसी और को समझाते हुए ना, you just can't find words, the right words to Yes. say. तो it's better मतलब कि आप इसको उसको exactly read out इसको कर लो. इसको इसको समझने के लिए एक ईज़ी थिंग ये है कि contingent beings are the beings which are dependent upon natural laws for their existence, ठीक है, और on existence of some other thing that cause them to exist. और necessary beings वो हैं which make contingent beings, ठीक है। और नेसेसरी बीइंग्स को खुद कोई रीज़न नहीं चाहिए एग्जिस्ट करने की। सो ये दो पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे एंड कीपिंग दीज टू पॉइंट्स इन माइंड, आप इन डॉक्यूमेंट्स को जब रीड करते हो, आप किसी भी चीज़ को रीड करोगे, यू विल गेट अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट Spinoza, Saint Thomas Aquinas, or Aristotle, whatever they are talking about, you will get a brief idea. Yeah, so यही essentially argument था ना लिबनिस का. Should I continue with Augustine? Yeah, sure, no worries. अच्छा, तो Augustine said Augustine, I admire greatly. Uh, I'll start with a brief biography of his life, brief overview of his early life. Saint Augustine, he was also known as Augustine of Hippo. He was born as Aurelius Augustinus in 354 AD in the Roman city of Tagaste in modern day Algeria. लास्ट पॉडकास्ट में हमने रोमन एम्पायर की बात की थी, तो ये उस पीरियड में पैदा हुआ था कि his society was subject to the Roman Empire. इसी वजह से he was a huge fan of Latin. He liked learning Latin more than he liked learning Greek. उसके उसके जो फादर थे पेट्रिशियस, ही वाज पेगन. ही वाज अ ही वाज अ माइनर लैंड ओनर. और इसकी जो मदर थी, शी वाज अ डिवाउट क्रिश्चियन, जिनका बहुत एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था उसके उसकी उसकी कन्वर्जन पे, ऑगस्टिन कन्वर्जन पे. They lived in northern Africa, लेकिन they were loyal subjects of the Roman Empire. They spoke Latin at home, or even despite relatively strained financial situations, उसने एक काफ़ी prestigious एक अपने स्कूल वगैरह से अपनी स्कूलिंग वगैरह की, कार्थिज से उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की. और उसने फिलोसॉफिकल वर्क्स पढ़ना शुरू किए व्हेन ही वाज स्टडिंग एट कार्थिज. उसने सिसरो के वर्क्स वगैरह पढ़े, प्लेटो के वर्क्स पढ़े. इन दोनों की आपको झलक नज़र आती है ऑगस्टिन के कामों में. उसकी उसकी जो यूथ थी, he spent it as hedonistic, very pleasure seeking, very sinful. And he kind of talks about his journey to conversion in his book called Confessions. ये किताब है Confessions by Saint Augustus. It's like you're reading a poetry book, but it's autobiographical. I loved this book because it kind of has that Shakespeare का touch to it. I love all things Shakespeare. खैर, इस ऑगस्टीन जो है, आफ्टर उसने अपनी स्टडीज़ वगैरह ख़त्म की, टीचर बन गया इन ठगेस्टे. फिर कार्थेज में शिफ्ट हो गया, वहाँ भी टीचर था इन ग्रामर एंड रेटरिक. इसकी ये इसके बाद का जो पीरियड था, इट वाज अ ट्रांजिशनल पीरियड, जहाँ पे इसने फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट वगैरह ढूंढी. उसने एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करना शुरू कर दिया जिसका नाम था मैनिकीज़म, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट करेक्टली. मैनिकीज़म एक फॉर्मर मेजर रिलीजन था जो कि ऑगस्टीन से कुछ 100 साल पहले ही फाउंड किया गया था बाय दिस गाय कॉल्ड मानी, hence the name Manichaeism. Mani जो था, he belonged to the Sasanian Empire. A short overview of the religion Manichaeism and why Augustine left Manichaeism after practicing it for over a decade. Manichaeism जो है ना, it kind of teaches an elaborate dualistic cosmology, describing the struggles between a good, natural, spiritual world of light and an evil, material world of darkness. It kind of talks about that evil versus good wali entire debate, and those that concept is one of the central ideas of Manichaeism. ये जो की बिलीफ है एक मैनिकीज्म का, इट इज के the powerful though not omnipotent good power which is God is opposed by the eternal evil power which is devil. रमानी जो था इसका फाइनल प्रॉफिट मानते थे मैनिकीस्ट जो थे आफ्टर जोरास्टर, बुधा एंड जीसस. अब ऑगस्टीन की जहाँ तक बात है, ऑगस्टीन हैड बीन फॉलोइंग मैनिकीज़म फॉर ओवर 9 years. फिर ही लेफ्ट मैनिकीज़म क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स
Manichaean myths thing about the sun, about the moon, about the stars, which did not make sense to Augustine. Augustine was like, why should you follow a religion which does not make sense, right? And like your religion has to add up. If your God tells you to do something which is illogical and which goes against his very nature, like we know God is good, and if it goes against that, and if something doesn't add up to you in objectivity, so you should not follow that religion. That is why Augustine left practicing Manichaeism after 9 years of practicing it. अब मैनिकिज्म तो इसने प्रैक्टिस किया ही था, इसके अलावा इसने काफ़ी फिलोसॉफिकल थियरीज के साथ अपने आप को एसोसिएट किया। न्यू प्लेटोनिज्म का बड़ा ये एक आपका ऐसे स्टूडेंट था जो कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्लेटोज डायलॉग्स, और इसका आपको इन्फ्लुएंस नज़र आता है इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ऑगस्टीन्स लेटर वर्क्स इन हिज लाइफ। अब खैर ऑगस्टीन जाता है एक विजिट पे मिलान, वहाँ पे एक वो बिशप को मिलता है, बिशप एम्ब्रोज को। ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और ऑगस्टीन जो है वो पहले एडमायर करता है एम्ब्रोस को, बिशप एम्ब्रोस को, बिकॉज ऑफ हिज स्किल इन रेटरिक, लेकिन बाद में उसकी एडमिरेशन बढ़ जाती है रूटेड इन हिज स्पिरिचुअलिटी एज वेल, क्योंकि एम्ब्रोस वाज नॉट ओनली गुड एट रेटरिक बट ही वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल, which was why Augustine was very inspired and admired him. खैर इसी टाइम पीरियड में ऑगस्टीन की जो मदर होती हैं, शी अरेंजेस अ मैरिज ऑफ ऑगस्टीन टू अ यंग क्रिश्चियन गर्ल। अब इस एंगेजमेंट को प्रोसीड करने के लिए ऑगस्टीन हैड टू लीव द गर्ल ही हैड फॉलन इन लव विद फॉर ओवर 15 years। इसका काफ़ी एक इम्पैक्ट होता है उसका, उसके ऊपर ही इज हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड ऑल ऑफ दैट, जो पूरे अपनी किताब कन्फेशंस में बताता है। अब ये होता है कि ये जो दो लोग होते हैं ना, एम्ब्रोस, बिशप एम्ब्रोस और उसकी अम्मी जो होती हैं, उसे डिवोट क्रिश्चियन, दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन हिज कन्वर्जन एंड हिज लाइफ। ऑगस्टीन फिर बैप्टाइज होते हैं ना 386 एडी में, और एक ही हैज रिलीजियस एक्सपीरियंस, ही टॉक्स अबाउट कि हाउ ही हर्ड अ चाइल्ड्स वॉइस इंस्ट्रक्टेड हिम टू टेक अप एंड रीड। Does it remind you of something? खैर it that voice tells him to take up and read. इसके बाद ही is baptized, his son Adeodatus is also baptized, और ये लोग मूव हो जाते हैं बैक टू अफ्रीका। जैसे they move, तो his son also dies and his mother also dies. After their death he devotes his life completely to the church and to Christianity. ये थी इसकी kind of overview about his life. जहाँ तक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का ताल्लुक है, ऑगस्टीन का आर्ग्यूमेंट शुरू होता है with a kind of hierarchy of things, of things that we see around us. There's this gradation, like one thing is higher over the other. There are living beings such as plants, rocks, but they are higher than those which are merely existing, जैसे rocks, dust. They are things that exist. Rocks and dust do exist, but they are not living things, right? इसके अलावा rational beings such as human beings, they are greater up the scale, right? Because they have intelligence as well as existence and life. अब इसी ग्रेडेशन के बारे में बात करते हुए ऑगस्टीन सेंसेशन और परसेप्शन की बात करता है। ही टॉक्स अबाउट द इंटीरियर सेंसेस एंड द एक्सटीरियर सेंसेस। इंटीरियर सेंसेस काइंड ऑफ give judgments on the exterior senses, like what you sense, your perception gives meaning to those sensations. वो इस ग्रेडेशन की बात करता है। अब वो कहता है कि इंटीरियर सेंस जो है आपकी, आप इसको कह लो ह्यूमन माइंड कह लो, इंटीरियर सेंस को रीजन कह लो, रैशनैलिटी, इंटेलेक्ट कह लो आप। तो ऑगस्टीन की नज़र में ये जो रीजन है, ये जो इंटीरियर सेंस है, इट इज सुपीरियर टू द एक्सटीरियर सेंसेस, सिंस इट बोथ सेंसेस कॉर्पोरियल थिंग्स एंड ऑल्सो इज अवेयर ऑफ द सेंस इटसेल्फ। अब ये जो इंटीरियर सेंस है, ये जो रीजन है, इट इज सुपीरियर नॉट बिकॉज इट हैज एक्सटीरियर सेंसेस एज इट्स ऑब्जेक्ट, बट बिकॉज इट इज इन सम वे इट जजेस देम, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट दे नीड एंड डायरेक्टिंग देम टू एक्शन। यहाँ तक ऑगस्टीन ने प्रूव किया है द सुपीरियरिटी ऑफ सेंटिएंट लाइफ टू inanimate creation, and among the senses the superiority of the interior to the exterior, या फिर in other words the superiority of the human reason, and saying that it is higher than anything else in mind. अब वो प्रूव करना चाहता है कि if there exists a reality superior to the human reason, then God exists. मतलब human reason से अगर superior कोई चीज़ है तो God exist करता है। अब वो कहता है कि अच्छा, इज आर रीजन, इज ह्यूमन रीजन इज द मोस्ट सुपीरियर थिंग इन मैन और इन एनीथिंग इन जनरली, क्या ऐसा है? वो कहता है कि रीजन जो है ना आपकी म्यूटेबल है, इट इज म्यूटेबल, इट कैन बी वेवर्ड। आपकी रीजन आपको इट कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट इम्यूटेबल ट्रूथ इज समथिंग विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल ट्रूथ हैज टू बी
superior than human reason itself. अब उसको वो फॉर्मुलेट करता है इस इन लफ्ज़ों में वो ये कहता है, इफ ट्रुथ वर इक्वल टू आवर माइंड्स इट वुड बी सब्जेक्ट टू चेंज. आवर माइंड्स समटाइम्स सी मोर एंड समटाइम्स लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी एक्नॉलेज दैट दे आर म्यूटेबल. Truth remaining in itself does not gain anything when we see it or lose anything when we do not see it. It is whole and uncorrupted. With its light, truth gives joy to the men who turn to it and punishes with blindness those who turn away from it. अब यहाँ पे हम I'll have to share my screen for a second. यार I forgot how I share my screen bro. अच्छा, share screen. Do you जस्ट see नेक्स्ट my टू द screen? आइकन ऑफ डिसेबल कैमरा के साथ एक आइकन होगा हाँ, शेयर स्क्रीन you का. see it now. या अच्छा, हाँ यार, this is Augustine's argument for the claim कि आपका जो IT है, your immutable truth, it is superior than human reason. अब it goes something like this. We abbreviate immutable truth as IT. Immutable truth is either more excellent than our minds, less excellent than our minds, or equally excellent. या यानी immutable truth या तो ज़्यादा superior है हमारे human reason से, हमारे mind से, या फिर equal है in intensity, या फिर उससे inferior है. Immutable truth is not less excellent, it is not inferior, since the intellect does not judge about the laws of number or wisdom but judges according to them. And it is also not equally excellent, since the truth is immutable, whereas human reason is mutable. Hence, immutable truth is more excellent than our minds. यहाँ पे हमने establish किया अभी तक कि जो immutable truth है ना, it is superior than our reason, than human reason. Uh, he moves on to his argument for the existence of God. You will have to understand this. You can pause it here and try to understand this entire argument. It goes something like this: okay, if there is an x such that x is superior to the human mind, there is no y such that y is equal or superior to x. Then x is God. There is an x such that there is no y such that y is equal or superior to x. ये इसलिए किया है क्योंकि it kind of closes the top, क्योंकि अगर ये हम क्लॉज ना डालते सेकंड वाला तो फिर ये ऐसा होता कि what is the largest prime number. Nobody knows what is the largest prime number. Nobody knows कि what is the most superior thing. तो उस टॉप को क्लोज करने के लिए we added that second clause here. Then what follows is that immutable truth is superior to the human mind and has no equal. Either there is an x such that x is superior to immutable truth, or there is no x. If there is no x such that x is superior to immutable truth, then immutable truth is God. If there is an x such that x is superior to immutable truth, and there is no such y that y is equal or superior to x, then x is God. Hence, there is an x such that x is God. Now, I'll try to kind of summarize what he has said here. I stopped sharing my screen. अच्छा, तो यहाँ पे ऑगस्टीन ये कह रहा है कि कैन वी हैव एस्टेब्लिश्ड कि इम्यूटेबल ट्रूथ जो है इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर थिंग अभी तक. इट इज़ मोर सुपीरियर देन आवर रीजन, इट इज़ मोर सुपीरियर देन आवर परसेप्शन एंड ऑल ऑफ दैट. So can immutable truth, which is the most superior thing we have established so far, can it be God itself? Can God itself be immutable truth? देखिए वो कहता है कि God as we know is all powerful, God as we know is omnipotent and is the creator of everything that exists. But immutable truth, just like forms as in Platonic terms या फिर theories, जो abstract concepts होते हैं ना, they exist in the mind. They cannot create material things out of nothing, right? So, immutable truth being abstract ideas that exist in the unintelligible world, they cannot be the creator of the universe as we see around us. इसकी वजह से the immutable truth cannot be the most superior thing. So, therefore, there must exist something superior to immutable truth, which is God. ये है entire argument ऑगस्टीन का. अब आप देखोगे कि वी टॉक्ड अबाउट सेंट एल्सम एंड प्लेटो इन द लास्ट वीडियो. ये कि काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता है. सेंट आल्सम का जो प्रूफ था विच टॉक्ड अबाउट के यू हैव टू कंसीव समथिंग देन विच नो क्रिएटर कैन बी कंसीव्ड. आपने कुछ ऐसा सोचना है जिससे जिससे सुपीरियर कोई चीज़ आप नहीं सोच सकते. ये एंसम की जो हमने बात की थी ना, एंसम के प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसमें एंसम ये कहता है इट इज डिटो कॉपी दैट. इट इज जस्ट clearly that same idea being presented here by Augustine. इसके अलावा you can also
see Plato's influence on Augustine as well, because Augustine खुद admitted in his book The Confessions कि he was a follower of Neoplatonism. He was a huge fan of Plato's dialogues, and those ideas had much significant influence on him and his conversion to Christianity as well. Plato की जो theory of forms था, it was in very short words like, consider something beautiful, कंसिडर ऑल द थिंग्स दैट आर ब्यूटीफुल, एंड उन ब्यूटीफुल चीज़ों के अंदर कॉमन एक चीज़ क्या है, उनकी ब्यूटी कॉमन है, और ये जो ब्यूटी है इट टेक्स पार्ट in an eternal idea of beauty which exists outside your mind. Now consider something else, something other than beauty, which is good or noble, just as justice, truth, virtue, all of those things. What do these things have in common? These things have in common the form of goodness. And what is the form of goodness? It is God itself, because God is the most supreme, God is the most good. तो माय पॉइंट हेयर इज के एंसल्म और प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है ना, दे आर काइंड ऑफ very similar to Augustine's ideas. Now that I've kind of summarized Augustine's argument for the existence of God, I like to add three things that Augustine talked about, which are not about the proof for the existence of God, but kind of related. Augustine बात करता है कि यू हैव टू बी अनबायस्ड, राइट? वाइल क्यों हंस रहा है? यू हैव टू बी अनबायस्ड। अभी अच्छा। जब बिल आएगा ना, जब बिल आएगा फिर तुझे फिर मैं यार मैं हँसूँगा पंखा तेरे नहीं को। चलाता ब्रो, आई डोंट, आई हैव अ वेरी शिटी माइक, राइट? दिस Yeah, माइक्रोफोन। that's fine. No अच्छा, worries. तो Augustine kind of emphasized on being unbiased. उसकी किताब है on free choice of the will. I haven't read it completely. मैं PDF पढ़ रहा था, but क्योंकि we had to record it today, I could not finish it. But Augustine इसमें बात करता है, ये कहता है कि believing is different from understanding, and we first believe the great and divine thing that we desire to understand. What is believed without being known cannot be said to have been found, and no one can become fit for finding God unless he believes first what he shall know afterwards. अब काफी लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और इसको कहा कि ऑगस्टीन ये कह रहा है कि अगर तो आपके दिल में खुदा का नॉलेज नहीं है तो आप खुदा को ढूंढ नहीं सकते। काफी लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया, लेकिन वो असल में बात यहाँ पे ये कर रहा है कि अगर तो आप बायस्ड हो ना, और आपने ये दिल में अपने टका लिया है कि आपने नहीं मानना, आपके पास प्रूफ बेशक खुदा सामने आप पे खुद आ जाए, आपने नहीं मानना तो आप नहीं ढूंढ सकते उसको, राइट? दैट्स व्हाट ऑगस्टिन मेंट कि यू हैव टू बी अनबायस्ड, यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इनफ टू नो व्हेन यू फाइंड समथिंग, क्योंकि दीज ये जो एम्पेरिसिज्म की मूवमेंट चली है ऑल अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद से स्पेशली आफ्टर डिसेकुलराइजेशन, so people are very empirical, right? They're agnostic or atheists and very away from religion, or they've convinced themselves that God does not exist. Selection bias, selective bias use करते हैं, confirmation bias use करते हैं to kind of look for evidence only that which supports their own particular worldview. So Augustine says that you have to be unbiased if you are to go on a search for God. अब सेकंड पॉइंट हियर इज कि साइंस और रिलीजन की बात करता है ऑगस्टीन। ऑगस्टीन कहता है कि जो नेचुरल ऑर्डर है ना, उस वो खुदा ने बनाया है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स डिवाइन ऑर्डर एज वेल, एंड द ऑर्डर्ड क्वालिटीज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड आर एक्सेसिबल टू ह्यूमन रीजन। तो पैगन एस्ट्रोनॉमर्स जो है ना, उन्होंने काफ़ी वैलिड ऑब्जर्वेशंस किए हैं अबाउट द नेचुरल ऑर्डर। तो वो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है एक्लिप्सेस, एंड आपको बताया अबाउट द इंटायर यूनिवर्स एंड एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, बट इवन इफ दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ गॉड। ऑगस्टिन यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल फेथ जो है ना, इवन विदाउट साइंटिफिक नॉलेज इज बेटर देन साइंटिफिक नॉलेज विदाउट फेथ। वो कहता है कि नॉलेज ऑफ द क्रिएटेड वर्ल्ड, वेदर साइंटिफिक और अदरवाइज, इज गुड ओनली इन सो फार एज इट लीड्स यू अपवर्ड्स टूवर्ड्स नॉलेज ऑफ द क्रिएटर। वो कह रहे हैं कि आपके पास जितना भी साइंटिफिक नॉलेज हो ना, वो बेफायदा है इफ इट डज नॉट lead you to realizing that a supreme being exists. You can compare this to what was it? It was tripartite theory of the soul by Plato. जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि there's this chariot, right, जिसके पीछे winged horses हैं, एक ब्लैक एक वाइट है। जो chariot है वो आपका रीजन है, और one is the appetitive part and the other is the spirited part. So you have to keep all of those aligned, and the purpose of that chariot is to ascend upwards towards spiritual enlightenment. But if you cannot control your reason, and if you cannot have your reason control your spirited and appetitive part, then you will not find spiritual enlightenment. That is what Augustine is saying is science.
scientific knowledge on its own is बेफायदा unless it leads you to finding God. अब लास्टली ऑगस्टीनियन थियोडिसी की हम बात करेंगे. थियोडिसी इज काइंड ऑफ द डोमेन which explores the question कि अच्छा अगर खुदा is good, right? God is good. So why does evil exist out there in the world? Why would a good God permit the manifestation of evil? इसको ऑगस्टीन ने इस तरह कुछ फॉर्मुलेट इसका आंसर किया है. वो कहता है कि evil could not exist within God nor be created by God, but it is instead a byproduct of God's creation. ऑगस्टीन ने ये नोशन रिजेक्ट किया है कि evil exists in itself, proposing instead that it is a privation of good and it is a corruption of nature. दोनों moral or natural evil they occur owing to an evil use of free will which could be traced back to हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का जो ओरिजिनल sin था. He believes कि ये जो evil will है ना, it is present in the human soul and it is corruption of the will given to humans by God, making suffering a just punishment for the sin of humans. अब यहाँ पे आपको लास्ट चीज which I'll say before closing this is कि this is exactly my view about theodicy. This is exactly my view कि why does evil exist when God is good? अगर खुदा अच्छा है, if God is good as we know he is, तो why does evil exist in the world? Why does suffering exist in the world? That is why उसका आंसर in Augustine's words is this कि आपके पास free will है और क्योंकि खुदा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करते हैं मैनी एब्राहमिक रिलीजन्स, तो गॉड वुड नॉट पनिश यू इफ यू हैड नो फ्री विल. यू हैव फ्री विल, आपके पास रास्ते हैं, एक सही रास्ता गलत रास्ता है. यू फॉलो द राइट वन यू विल बी रिवॉर्डेड, यू फॉलो द रॉन्ग वन यू विल बी पनिश्ड फॉर इट. अगर ना फ्री विल होती, यू हैड नो फ्री विल, आपके फेट में लिखा होता कि आपने इस दिन ये इस बंदे का कत्ल करना है, आप यू वर ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड टू डू दैट, कमिट दैट ईविल, तो आपको सजा क्यों मिलती, राइट? हम हमेशा से जन्नत में रह रहे होते. इस इंटायर टेस्ट का ये जो 70-60 साल की जिंदगी, इट इज़ अ टेस्ट बेसिकली, राइट? The reason for this test is because you have free will, and when you have free will you are free to commit evil, which is why suffering exists in the world. So खुदा की इजाजत आप नहीं कह सकते उसको, खुदा की छूट आप कह सकते हो कि you know whatever the fuck man wants to do he can do that, but he'll have to answer for it in the afterlife. तो ये था कॉन्सेप्ट थियोडिसी का. यप एग्जैक्टली. और अगर बंदा देखिए इसको स्टडी करे इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर रिलीजन, तो उसमें भी यही कहा गया कि इंसान का जो हर काम है, हर एक्शन है, इट इज़ बेस्ड अपॉन नीयत के एलिमेंट पे बेस करता है. एंड वी हैव फ्री विल. इन कॉन्ट्रास्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ, अगर देखें फरिश्तों को देखें, तो फरिश्तों को जो मतलब कि उनके अंदर फ्री विल नहीं है. उनको जो खुदा का हुक्म मिला हुआ है उन्होंने उसी के हिसाब से उसी के ऊपर अमल करेंगे. मगर इंसान के अंदर फ्री विल है, इसलिए इंसान का एक नेक अमल हज़ार फरिश्तों के नेक अमल से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि इंसान के पास फ्री विल मौजूद होते हुए वो कोई नेक काम कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन आइज ऑफ गॉड. ये बात है कि नहीं? हाँ, इसके साथ ही आई लाइक टू ऐड वन लास्ट थिंग. यार मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ लाइक काफ़ी महीनों से, 8-9 महीनों से, सेक्सुअलिटी के ऊपर कि इज सेक्सुअलिटी बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज्ड, इज सेक्सुअलिटी इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड, लाइक इफ यू born a homosexual, sorry, not I wasn't going to say that. I was going to say कि if you are a homosexual at this point in your life, were you born that way या फिर you kind of you were influenced by societal factors वगैरह वगैरह. तो I could not find any decisive answer to that. लेकिन जब मैंने रिलीजन पे देखा ना, तो मैं लूत की बात होती है, they were homosexuals and they were punished for it. तो I kind of believe this now, even though मैं रिसर्च पेपर में empirically prove नहीं कर सकता ये argument, लेकिन मेरा अपना यकीन है sexuality is नॉट बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज बट इट इज इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस. कौम लूत पे अजाब क्यों आता? अगर अल्लाह ने उनको पैदा ही ऐसा किया होता, राइट? अल्लाह ने अगर उनको बिल्कुल पैदा ही वैसे किया है तो उनको अजाब क्यों डालते? तो उन पे अजाब इसलिए आया क्योंकि दे हैड फ्री विल एंड दे चोज आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल टू बी दैट वे. या एग्जैक्टली. या बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल ये बात ये था हंड्रेड ऑगस्टीन परसेंट का डन है. फिलोसफी. So yes, so now I will just close you talking about Baruch Spinoza. ठीक है. Baruch Spinoza was a Dutch philosopher born in 17th century in a Jewish community in Amsterdam. ये बाय बर्थ एक ज्यू पैदा हुआ था, और इसके जो पेरेंट्स थे दे वर डिवोटेड जूस थे. ठीक है. एंड इसने अपनी चाइल्डहुड में, अपने यूथ में
जुडिज्म को पूरी पूरी डिटेल में पढ़ा। मगर फिर एट द सेम टाइम जब जैसे ही बड़ा हुआ, ही स्टडीड अबाउट फिलोसफी, थियोलॉजी, एंथोलॉजी, ही कंटिन्यूड टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम हिज रिलीजन। इसने he tried to present religion as a relevant fact other than people trying to establish superstitious beliefs in religion, ठीक है। इसने इसने एक तरह का रिलीजन को री इन्वेंट करने की कोशिश की थी, और इसकी जो आइडियाज थे दे वर अ बिट बिजार फॉर द टाइम, उस वक्त के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजार थे। इसने एक फेमस बुक लिखी थी एथिक्स के नाम से, विच वॉज entirely written in Spanish, और ये पब्लिश हुई थी इन 1677। इसमें इसने चैलेंज इसमें ही चैलेंज दैट जो गॉड है, गॉड इज़ नॉट अ पर्सन, ठीक है, आउटसाइड द लॉज ऑफ नेचर और यूनिवर्स। ही क्लेम दैट जो गॉड है, he doesn't hear to our prayers, or he does not perform any miracles. He claimed that the God doesn't even punish anyone for their misdeeds or their deeds, ठीक है। And he also used to believe that there is no afterlife after a man dies, ठीक है। उसके उसके करीब ये सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे लोगों के खुदा के बारे में। इसने ये भी ऐड किया कि खुदा कोई किंग नहीं है, ही इज़ नॉट अ क्राफ्ट्समैन, ही इज़ नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, और खुदा ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता किसी को कि वो खुदा के नाम पे किसी और इंसान को मारे, या कि खुदा के नाम पे कोई जंग लड़े, ठीक है। स्पिनोज़ा का जो कॉन्सेप्ट था खुदा का, वो काफ़ी, आप कह लो कि बेसिक था, और बेसिक इस नेचर में था कि ही यूज्ड टू think that God is indistinguishable from what we might call nature, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में he used to believe that God is nature, God is universe, God is the law of universe, and God is the reason, God is the truth, ठीक है। उसका मानना ये था कि हमारे इर्द गिर्द सब कुछ जो है, और हर चीज़, और हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है, एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज़ गॉड, ठीक है। उसने ये कहा कि हम गॉड को कोई इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, और इसने अपनी बुक एथिक्स में ये लिखा कि वट एवर इज़ इन गॉड, वट एवर इज़ इन गॉड, एंड नथिंग कैन एग्जिस्ट और कैन बी कंसीव्ड विदाउट गॉड, ठीक है। उसने ये कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, वो बैठ के खुदा से दुआ मांगता है, ठीक है, वो ये जो इंसान का जो अमल है, अमल ऑफ प्रेइंग, इट्स लाइक ईगोइस्टिक है एक तरह का, क्योंकि ही इज़ अपीलिंग गॉड टू चेंज द लॉज ऑफ नेचर और लॉज ऑफ यूनिवर्स जस्ट टू प्लीज हिम, और जस्ट फॉर द गॉड टू मेक समथिंग टू मेक समथिंग ईजी फॉर हिम। अगर एक बंदा बैठ के खुदा से दुआ करता है, तो अकॉर्डिंग टू बारक स्पिनोज़ा, वो खुदा से ये वो खुदा से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि खुदा अपने लॉज ऑफ नेचर और लॉज ऑफ यूनिवर्स को चेंज करके उसकी कोई भी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करे, ठीक है। और वही कहते हैं कि ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इगोइस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। आगे जाके वो ये आर्ग्यू भी करता है कि इंसानों का जो मेन टास्क है, इट इज़ टू स्टडी एंड रिसर्च एंड टू फाइंड द रीजन ऑफ यूनिवर्स एंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है। और रादर देन कि बंदा प्रोटेस्ट करे, ठीक है, प्रोटेस्ट करे खुदा से बाय सेंडिंग प्रेयर्स, बाय सेंडिंग लिटिल मैसेजेस इन फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, ठीक है। To put in a way, he says that whoever loves God cannot strive that God should love him in return. उसका मानना ये था कि अगर कोई भी बंदा खुदा से प्यार करता है, तो वो साथ में ये हाल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि खुदा भी उससे प्यार करे, ठीक है। Only a egoistic person would believe that God should bend the ways or laws of universe just to make his life easy or to answer his prayers, ठीक है। Spinoza was deeply influenced by stories of ancient Greeks, ठीक है, who used to believe that wisdom lies इन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के लॉज को पढ़ने में विस्डम है, ठीक है, रादर दैन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, ठीक है। इंसान को चाहिए कि इंसान यूनिवर्स के लॉज को स्टडी करे, और फिर उनको स्टडी करके समझे, एंड देन उन सब लॉज को समझने के बाद खुदा की इबादत करे। स्नीकर जो था, जैसे कि स्पिनोजा का एक फेवरेट फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर, आई डोंट नो इफ आई एम टेकिंग हिज नेम करेक्टली और नो, सिनिका was his name. Seneca. Seneca, yes, I think so, Seneca, yes, ठीक है। हेड कंपेयर लाइक सेनेका ने ह्यूमंस को कंपेयर किया था विद डॉग्स ऑन लीश, ठीक है। एंड and human beings are led by the necessity of life in range of directions, ठीक है। अगर इंसान इन नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के अगेंस्ट अपनी लाइफ को
अगेंस्ट आने की कोशिश करेगा। जैसे कि कुत्ता स्ट्रैंगल हो जाता है जब वो अपनी लीश के अगेंस्ट भागने की कोशिश करता है, इसी तरह इंसान भी स्ट्रैंगल हो जाता है, इंसान के भी सारे जो बिलीव्स हैं वो सारे क्रम्बल कर जाते हैं। स्पिनोज़ा यहाँ हमें बताता है कि God and what God wants us to is to understand the of how universe works। और इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल ये है कि इंसान साइंस को स्टडी करे, फिलोसफी को स्टडी करे, बायोलॉजी को स्टडी करे, एंड फ्रॉम दिस a human can understand the perception of God। ठीक है। और बट वट वी शुड डू इज दैट, वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशनली लोग खुदा से अपनी दुआएं मांगते हैं, जबकि हमें ये करना चाहिए कि वी शुड फाइंड व्हाट गॉड वांट्स। और हम उस सब को ढूंढने के लिए वी मस्ट स्टडी एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। स्पिनोजा ने दो वेज एक तरह की प्रिसीव किया हाउ टू लुक एट लाइफ। ठीक है, ऑफ हाउ टू वेज। पहला था सब स्पीशी ड्यूरेशनिस्ट और सब स्पीशी ऑर्टिनराइट, पता नहीं क्या नाम है इसका। अटर्निटाइटिस। ठीक है, पहला जो था, अब आई विल जस्ट एक्सप्लेन देम क्विकली बिकॉज स्पिनोजा के बारे में तो एज यू ऑलरेडी नो इट्स नॉट मच टू टेल। और उसने कहा था कि हमारी जो लाइफ है, इट जो कुछ लोग जो हैं दे ट्राई लाइक हमारे अंदर जो एबिलिटी टू जज, टू कंसीव इमोशंस, ठीक है, ये सब इमोशंस इस वजह से हैं क्योंकि हम लोग और जो बड़ी बड़ी जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स की, हम उस सब को डिनाई करके अपनी इगोइस्टिक सेल्फ के अंदर रहते हुए we give ourselves the authority to judge other human beings, and in the process of doing so we conceive the emotions of such as guilt, sorrow, jealousy, and envy, which leads to the war and destruction which has been happening in the world since past 5,000 or 6,000 years। उसी कह रहे हैं, बट अगर इंसान उसकी जगह रीज़न और इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में जगह दे, ठीक है, और अपनी ज़ात को कम करके यूनिवर्स को एज अ होल स्टडी करने की कोशिश करे, उसके सारे इमोशंस और सारी जो मतलब कि उसके अंदर से जो बुराई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज ही विल think of himself as a lesser being while studying the existence of universe, and in this process he will truly find God। So this was the study of Baruch Spinoza। Spinoza की जो beliefs थे, they were against the traditional religions of those times। इसकी वजह से इसको इसको ये नुकसान हुआ कि इसकी जो अपनी कम्युनिटी थी, जूइश कम्युनिटी, उसने उसको निकाल दिया एम्स्टरडेम के अंदर से। इसके अगेंस्ट बकायदा जो उस वक्त के पोप थे, उन्होंने डिक्रीज भी किया, डिफरेंट किस्म की डिक्रीज भी रिलीज़ की ऑफ excommunicating him from different type of philosophical you can say universities of that time। इसको मतलब कि एक तरह का आउटकास्ट कर दिया गया फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी। एंड इसने जो अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, ही स्पेंड हिज लास्ट डेज लिविंग इन अ स्मॉल टाउन while teaching some kids or acting as a private tutor। सो बारिक स्पिनोजा के बारे में इतना कुछ बताने को था नहीं, मगर yeah, I just told you about what he used to think about the concept of God, or and Yeah, how he used there's one more argument for the existence of God. अच्छा, उससे पहले I agree with you कि उसके जो views थे ना about the nature of God, they were more controversial because they went against the Judeo-Christian ideas of God कि God punishes you, God afterlife है, और God hears your prayers। उन ideas के against जब वो गया तो they were deemed controversial। लेकिन उसके जो proofs हैं of the existence of God, though they alone are not very controversial। जैसे कि उसका एक posterior आया argument है, इट काइंड ऑफ टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड उससे रिवर्स इंजीनियर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को। वो कहता है, वो रिलेट करता है पावर को एग्जिस्टेंस के साथ। वो कहता है इफ समथिंग एग्जिस्ट्स इट हैज पावर टू एग्जिस्ट, राइट। सो इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट वाइल सम फाइनाइट बीइंग्स एग्जिस्ट, मतलब अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन हम करते हैं, तो इन थेरी हमें ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए खुदा से, क्योंकि वे एग्जिस्ट एंड ही डज नॉट। So but we cannot be more powerful than an infinite being which is supremely perfect। So therefore for us to not be more powerful than that perfect supremely all powerful being, God must necessarily exist। ये आइडिया था पोस्टेरियर आया आर्गुमेंट था स्पिनोजा का। लेकिन इस देयर इज नॉट a lot of proofs as far as Spinoza goes, but there are, you'll find much more material on the nature of God in Spinoza's philosophy, talk about the very nature of God. controversial. Yes, that is what his book Ethics is about।
और यही बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक यू टोल्ड, इसने इतना कुछ इतने आर्ग्यूमेंट्स पेश नहीं किए रादर देन perceiving what is God and what is the nature of God, उसके बहुत ज़्यादा ऐसे स्टडी की और ज़्यादा इसने लोगों को अपना आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश की. But yes, it is a different type of you can say perception to the nature of God, to the usual to the usual perception of God we usually study in our daily lives. So I think so we must wrap up our podcast now. What do you think, Abdullah? Do you have any ending comments to add? यार, uh, one reason we're doing this is because I'm inspired by philosophy. I admire philosophy. Belief does as well. So we're trying to portray this other side of the argument of the existence of God. क्योंकि जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं ना, वहाँ emphasis होता है कि तकलीद तकलीद तकलीद, मतलब बिलीव, ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड फेथ ब्लाइंड फेथ. बट उसकी वजह से आपकी फाउंडेशन वीक होती है. व्हेन सफरिंग गेट्स टू यू, यू लूज योर फेथ, यू बिकम एग्नोस्टिक और atheistic. But if Hmm. you find God through logic or philosophy, so that belief is much more longer lasting, that is much more sustaining, and it will give your life meaning, and your belief will be more pure than if it और had been inherited by your parents. सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम फ़िलासफ़ी को इस्लाम के साथ को रिलेट करें और इस्लाम के साथ लेके चलें, इट मेक्स योर बिलीफ मच मोर स्ट्रॉन्गर. जैसे कि क्रिश्चियनिटी के साथ फ़िलासफ़ी इतनी ज़्यादा नीच नहीं मतलब कोरिलेट नहीं करती. जैसे देखिए उनके वहाँ कॉन्सेप्ट है Trinity. ऑफ ट्रिनिटी. ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, इट एज अ होल इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ठीक है. मगर अगर जब इंसान इस्लाम के बारे में पढ़ता है तो इस्लाम को पढ़ के इंसान कहता है लाइक दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड दिस कोरिलेट्स विद philosophy which has been existing uh, in humans since last 3000 years, है कि नहीं. एंड मेरे ख्याल में अगर हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि हम बस ब्लाइंडली बचपन से पैदा होते हैं, माँ बाप ने मुसलमान बना दिया. ठीक है. हम इस्लाम इसलिए हमारा वक्त के साथ साथ इस्लाम के साथ कनेक्शन ख़त्म होता रहता है, अपने रिलीजन के साथ कनेक्शन ख़त्म होता रहता है. जैसे ही हम बड़े होते हैं अपने यूथ में जाते हैं, बिल्कुल अपने रिलीजन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. मगर जब हम बुढ़ापे में जाते हैं, हमारे पास दुनिया का सारा एक्सपीरियंस, हमने सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, हमने दुनिया से सारे सारे आप कह लो कि एक तरह के सबक ले ली चुके होते हैं. फिर जाके हमें रिलीजन के बारे में जब हम दोबारा कुरान पाक खोलते हैं, फिर हमें कुरान पाक सही तरीके से समझ आता है कि नहीं. तो व्हाई नॉट हम बचपन से ही अपने बच्चों को फ़िलासफ़ी सिखाएँ स्कूल्स में, है कि नहीं? और देन वी टीच देम अबाउट इस्लाम. लिटरली हमारे जो मुस्लिम्स की जो मैं कह रहा हूँ कि जो रेस निकलेगी, इट वुड बी एलीट रेस, है कि नहीं. अब मैं जैसे कि देख रहा था, एक बहुत मशहूर इस्लामिक स्कॉलर है, नुमान अली खान, इफ़ यू नो अबाउट हिम. आई लाइक दैट गाय बिकॉज ही नोज अबाउट फ़िलासफ़ी, ही हैज़ स्टडीड फ़िलासफ़ी इन डिटेल. और वो इस्लाम को फ़िलासफ़ी के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है. अ, और इंसान को जब एक परसेप्शन मिल जाए कि देयर इज़ समथिंग बिगर देन अस, देयर इज़ समथिंग कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स, तब इंसान साइंस, फ़िलासफ़ी और किताब सबको लेके जब पढ़ता है, तो मेरे ख़्याल में कुरान पाक को जब आप दोबारा पढ़ते हो तो आपको कुरान पाक की हर एक आयत की ज़्यादा समझ आती है कि नहीं इस तरह की एक बात. Yeah, वही ना, the religion you follow, it has to make sense. If it doesn't make sense, why are you following it? Yeah, that is why a lot of people that is why I think so Islam is the largest converting faiths. काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन से कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ रहे हैं, हिंदुज़म से कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि इस्लाम से इस्लाम मेक्स सेंस इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड. Islam made sense in medieval age, Islam made sense in modern age, and Islam will make sense in the future age as well, technological age as well. So मेरे ख्याल में यही अपनी पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं. होपफुली हम इस टॉपिक को दोबारा शुरू करेंगे with the third part on Eastern philosophers. ऐसे ही है, सूफिज्म, रूमी वगैरह. And yes, and then हम इसको फिर दोबारा ज़बरदस्त एक तरह का मैं हाँ, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा बिकॉज़ मैंने ज़्यादातर ईस्टर्न फिलोसफर्स को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा. व्हाट अबाउट यू अब्दुल्ला? हैव यू रेड अबाउट देम इन डिटेल? यार, मैंने इब्न अताला का और रूमी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बट नॉट इन मच डिटेल. Yeah, no worries. We can add Sufism in the context as well.
What do you Yeah, think? yeah, it will Yes, be a no, significant part. no worries. Okay, till then, guys, take care, and Abdullah, Allah Hafiz.